Good evening and welcome to match number 62, where Aravalli Arrows are taking on the Hampi Heroes. And this is the winter edition where we are slowly moving towards the challenger round from the booster round. I'm Navin Shori and live and exclusive on fan code is Aravalli Arrows trying to make up that points table. And as the days goes by, it is the Panchala Pride who will take on the Vijayanagara Veers in the next 5 p.m. game. And then the Chola Veerans will take on the Kaziranga Rhinos, where that will be a big challenge for the Kaziranga Rhinos. And then at 9 p.m., we have the Murthal Magnets taking on the very strong Palani Tuskers. So that is the lineup for today, as the matchups will be there. And looking at the points table, it will be really interesting to see where Aravalli Arrows are finding themselves. They have number 5 placed, and the Hampi Heroes are always on top. They haven't lost a game yet in this booster round. So it will be interesting if Aravalli Arrows can give it one back to the Hampi Heroes. Can they do that? To find out, let's go down to Harshit to bring in both the teams on the mat. It's the time for the majestic Monday. मुकाबले की शुरुआत होगी आज के दिन की एक बड़े गेम के साथ, जहां पर टेबल टॉपर्स यहां पर भिड़ेगा अरावली एरोज के साथ। तो तैयारी आप सभी भी कर लीजिए और सीट की पेटियों को जरा बांधे रखिए, क्योंकि एक्साइटमेंट गेम आ रहा है आपके मध्य। सबसे पहले बुलाना चाहेंगे द टीम ऑफ एरोज। Let's invite and give it up for Aravalli Arrows. और चलिए अब अरावली एरोज को कड़ी टक्कर देने आ रहे हैं द टेबल टॉपर्स एंड द डिफेंडिंग चैंपियंस हम्पी हीरोज। Hampi Heroes haven't lost a match yet, and Aravalli Arrows are number 5. So it's all important for the Aravalli Arrows to make sure somewhere Hampi Heroes find that first loss in the booster round. Can they do that with this side, as Rajendra Bhakar comes there on that left corner? Very strong defender. Anuj Saini will be the captain on that right corner, and one main name to watch out for in the raiding department, Vishnu Kumar Sharma, tall raider, along with Vishal Chaudhary and Rohit Yadav. And also Navpreet Singh and Nitin Kumar will be managing the covers. Bhagat Singh, Deepesh Kumar, Gopal Singh, Tausif Ahmed and Himanshu Chaudhary will be there, along with Suraj Gurjar, the coach, on the substitution lines. And Harshit, good evening. It's the Hampi Heroes, very strong side. Haven't lost a match yet. What do you think? Can they win this one also? देखिए, उसी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी तक जीत रही है मुकाबलों को नवीन, वैसे ही आगे रोकथाम नहीं लगाना चाहेंगे। और चलिए शुरुआती साथ की बात करते हैं। गौरव कुमार आज खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, सचिन मेनपाल वहां पर होंगे, रोहित नंदल होंगे, करमवीर ठाकुर, सावन खत्री, योगेश धैया सबसे बड़ा नाम, और आशीष मलिक। यानी कि आज राहुल राठी शायद आपको सब्स्टिट्यूट में नजर आएंगे, और अंकित राणा भी शुरुआत नहीं करेंगे। अंकुश कुमार, रवि खत्री, ये सब्स्टिट्यूट के नाम है। और मुझे लगता है अरावली एरोज इस मुकाबले को कंफर्टेबल होकर खेलना चाहेगा, प्रेशर नहीं लेना चाहेगा। और नवीन, मुझे लग रहा है कि आज पहली हार हम्पी के लिए आ सकती है। Okay, that's a big line. But yes, Sudhakar, he's there. 135 is the least there that he can be making up to, where he will be again followed very closely with Kunal Bhati. He's played the same number of games, but look at that. Arjun Rathi playing the less number of games, and he's got that strike rate at around more than 70 to 80%. So that's nice to see. And the defenders yesterday, Gautam, didn't do well. Yeah, he slips down on that place. जी, क्योंकि कल वहां पर उन्हें टैकल पॉइंट नहीं मिला, और आशीष मलिक ने अपने पिछले मुकाबलों में 9 टैकल पॉइंट्स अपनी टीम के लिए
प्राप्त किए थे 10 मुकाबलों में 55 टैकल पॉइंट। ये फिनोमिनल डाटा है और इससे पता चलता है तीसरे पायदान पर आपको रवि भी नजर आएंगे, रवि भाटी। बट नवीन, इस डाटा से पता चलता है कि कितना डिफेंस ओरिएंटेड ये विंटर एडिशन रहा है। ये क्या हाई किया था सही से या फिर पॉइंट बताया गया था? Raki Kumari just says, wait, hang on, let me spin the coin. As Hampi Heroes won the toss, Ashish Malik, the leading defender of the Yuva Kabaddi Series Winter Edition, takes the coin and goes back. As we will have the man to watch out for is Vishal Chaudhary for the Aravalli Arrows. 12 matches, 87 grade points and 50% strike rate. Not the one that you really want to associate with Vishal Chaudhary. You will want him to do well and more because he's got the support of Vishnu Kumar Sharma. He can just take that little bit of more time. और आशीष मलिक की आप वहीं पर बात करते हैं, आपने बेस्ट डिफेंडर की भी इनके लिए बात की थी 10 नंबर जर्सी के साथ। बिल्कुल इंसाफ ये खिलाड़ी कर रहा है, 10 ही मुकाबले खेले हैं, 55 टैकल पॉइंट्स और टैकल स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। देखिए ओवर 50% हमेशा टैकल स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी होती है नवीन, और ये तो 62.2% है। Absolutely. As you remember of that jersey number 10 which is happening in the World Cup. Yeah, Lionel Messi will be questioned tomorrow. What is going to be his selection process as well for the team, as Suraj Gurjar has done a very good selection for Aravalli Arrows, and Rajkumar comes in for the very, very strong defending champion Hampi Heroes on the top of the points table as well. So Rajendra Bhakkar, that's a very, very good inclusion that he is making a comeback. जी, इनका कमबैक और अनुज का कमबैक आना ये टीम के लिए सबसे बड़ी, जो आप कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी की तरह। 13 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 8 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं और 5 में से 2 मुकाबले बूस्टर राउंड में हारे हैं। और ये दोनों कॉर्नर्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि पहली हार शायद हम्पी के लिए आ सकती है, बट ये जो रेडर्स का डिपार्टमेंट है ये बहुत लाजवाब है हम्पी के लिए नवीन। Absolutely. Yeah, 10 matches that's been won. The 2 that was lost is in the survival round. That too in the later half of the survival round. Somewhere Hampi Heroes just managed to lose that 2 games, but still no loss in this booster round. What will the match status is going to be? Let's go down to the countdown and find it out. So the toss has been won by Hampi Heroes. The first wade will happen from Vishal Chaudhary or Vishnu Kumar Sharma, as Jay Kumar gives the go-ahead. Yeah, it's Vishal Chaudhary. Comes in from that right flank. And also remember, he will be up against the top defender of the Winter Edition, Ashish Malik, on that left corner. Captain. And remember, there will be a lot of kicks that will be coming in from the goat. Yeah, he gets the bonus under the nose of Ashish Malik. जी, ये बोनस चुराया है और बोनस के साथ शुरुआत की। अरावली एरोज में आज आपको हिमांशु चौधरी नहीं दिख रहे हैं, जिनका टैकल स्ट्राइक रेट लगभग 50 के अबाव होता है, बट क्या यहाँ पर गौरव कुमार ने पहला ही टच यहाँ पर नवप्रीत को कर दिया है। जरूर रेफरी वहाँ पर निर्णय यही लेंगे कि अरावली एरोज के पक्ष में निर्णय गया है। रोहित यादव का आज इंक्लूजन है नवीन, ये युवा खिलाड़ी हैं, बिल्कुल गन की रफ्तार की तरह वहाँ पर अपना प्रदर्शन को दोहराते हैं। और लीजिए पहला पॉइंट इनके लिए, इस युवा खिलाड़ी के लिए। Really strong, vicious kick that went on, and then the toe touch. He wanted to go in and actually attack, but then somewhere the right cover just does not go back in time. As Gaurav comes in, he also has been very, very supportive along with the other raiders to Savan Khatri. And somewhere Hampi Heroes, I'm really feeling that they are lacking that one main raider. Yeah, that's why. Strong dash is coming in from right cover, Nitin Kumar. जी, बहुत अच्छा डैश, और गौरव कुमार को इस बार फिर से उन्होंने प्रयास किया था। गौरव और नवप्रीत की जोड़ी ने, देखिए क्योंकि वेस्ट पर वहां पर नवप्रीत भी गए थे, नितिन का बहुत अच्छा वहां पर साथ मिला और दोनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा डैश किया। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम्पी हीरोज आज मेन रेडर के साथ नहीं उतरा है, यानी कि अंकित राणा और सावन खत्री। देखिए नवीन, जब पिछला मैच भी था हम्पी का, वहां पर अंकित राणा मौजूद थे, बट उन्होंने सिर्फ 3 या 4 रेड की। सावन खत्री ने 17 पॉइंट स्कोर किए थे, जिसमें 2 बोनस पॉइंट थे और 15 टच पॉइंट थे। इसलिए शायद आज करमवीर, सावन खत्री और गौरव के साथ टीम गए हैं। अंकित राणा को थोड़ा शायद रेस्ट देना चाहते हैं। Absolutely. Karamveer Thakur, that jersey number 7 has been spoken
for the entire world for the heartbreak that went across Portugal and all the other team supporters of Portugal. Number 7, Ronaldo, and just going off without a World Cup win in his career, and he's very doubtful that he will be playing the next World Cup because he may be 41, 42 years of age. But how disheartening can that be? And that is why I just kept on saying that this FIFA World Cup somewhere is not given the right opportunities or the right expectations, because Brazil went out very soon, does not even qualify for the quarterfinals. Now Portugal away. It's now only Croatia, Argentina. That's going to be real tough time for all the big team supporters. Let's see if Vishal Chaudhary can get this out of his books in the do or die race. Comes across and then tries to run in towards the left flank. There, ankle hold. Thank you so much. There's the Hampi Heroes' defense. Yogesh Dhaya for his first point. ये आ गए हैं, इन्होंने बता दिया है कि फिर से अब ये पूरी तरह से तैयार है। वो पिछली बार का जादू शायद कोई रेडर भूले नहीं होंगे। योगेश दहिया का शानदार एंकल होल्ड, विशाल चौधरी अपने आप को वहां पर धरे दबोचे पाए गया। करमवीर इस बार राइट कॉर्नर से, क्या ये कप्तान अनुज का पहला टैकल है उनके आज के मुकाबले में? जरूर करमवीर की नी यहाँ पर अनुज के चेहरे पर जाकर लगी है, जरूर वहां पर इंजर्ड न हुए हो तो ज्यादा बेहतर है। Yeah, just on that forehead, so he's okay. He just made sure the jump was nullified. He caught him in mid-air. Actually, Yogesh Daya, he's also made his comeback. He played for the Kaziranga Rhinos last edition. And did he step into the lobby before touching the defender? Yeah, no. See, they want to go for the review. They think that there is no kick and he stepped into the lobby that time. It really looks like that, because it's very evident to see what just happened, as Kalidas will have a little bit of a meeting. No kick. He's kicking in mid-air and now steps into the lobby also. 1 point, Aravalli Arrows. Jersey number 22 out. They want to go for the review maybe. They really want to go for the review on that right corner. Oh. No, they haven't taken a review. और सिर्फ अगर एक पॉइंट वहां पर मिला है तो क्या पहले लॉबी में नहीं चले गए थे रोहित यादव? Isn't it? अगर 2 पॉइंट समझ में आता कि चलिए अगर 2 पॉइंट है तो यानी कि योगेश दहिया को वो किक लगी थी, उसके बाद से यहाँ पर लॉबी में गए थे तो लॉबी एक्टिवेट हो जाती है। बट बिना लॉबी एक्टिवेट हुए क्या लॉबी में शायद चले गए थे? क्या इस रेड को हम पुनः वापस थोड़ी देर के पश्चात देखेंगे। बट यहाँ पर खाता अब हम्पी हीरोज का 1 है, अरावली एरोज के पास 5 पॉइंट है, तो अच्छी शुरुआत अरावली ने कहीं ना कहीं की है। Yeah, very much. See, I'll tell you, if there is only 1 point that's been given, he stepped into the lobby, and for sure the right corner on that occasion, Rohit Nandal should have gone for the review. He's still there managing that right corner. Rohit Nandal, he generally plays that left cover, number 22. He was just being sent out. What was the issue in taking the review? जी योगेश दहिया अभी मौजूद है यहाँ, तो क्या एक शायद योगेश दहिया को लगा हो कि उन पर की गई हो, और सिर्फ अगर 1 पॉइंट जा रहा है तो यहाँ आपको दूसरा पॉइंट नहीं गंवाना चाहते हैं, ये शायद हो that's सकता what है। I said. See, Rohit Nandal is being sent out, so they should have actually gone in for the review. Rohit Nandal should have just gone for that. Yeah, they're just missing that trick. Anyways, they've given away a bonus. That's the second point only for Hampi Heroes. As Vishal Chaudhary comes in. That's the goat. That's the goat kick that comes out. Oh, right. Vishal. बड़ो पिछले कुछ मुकाबलों से यहाँ पर विशाल उतना इफेक्टिव नहीं दिखे हैं। वो विशाल का जो आप प्रदर्शन देखते हैं अक्सर विशाल चौधरी से, पिछले कुछ मुकाबलों में उन्हें लगातार बेंच पर भी बैठना पड़ा। अब विष्णु कुमार शर्मा जो पिछले मुकाबले में फेल रहे थे, उससे पिछले मुकाबले में उन्होंने एफर्टलेस प्रदर्शन किया था। अब यहाँ पर ये 2 और डाई रेड में योगेश दहिया के एंकल से बचना होगा। किक लगाया, उसके साथ सचिन को भी शायद टच किया। विष्णु कुमार शर्मा ने आज अच्छी शुरुआत कर दी है 2 पॉइंट्स के साथ। Very much on the kick, and Yogesh Daya wanted to go for the reverse ankle hold and then was confused where to have the grasp. The kick he escaped, yeah, that's a good one, but then because of the height of Vishnu Kumar, he didn't even get the reverse ankle.
That is so important for the defender to be very sure of which ankle you're actually going into attack. And Bonus Savan point, Khatri goes Hampi back Heroes. empty hand, gets the bonus. Didn't look like that he got the bonus at the first occasion. चले अब यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है, दो ही महज खिलाड़ी हैं और क्या अरावली के पास एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि सचिन मेनपाल वहां पर कवर के खिलाड़ी डिफेंडर डैश में अच्छे होंगे बिल्कुल, पर ज्यादा दूर से वहां पर डैश करने के आएंगे। सावंत खत्री को किक लगाया क्या है और बिल्कुल क्या वहां पर संपर्क हुआ है, जी नहीं। विशाल चौधरी एम्प्टी रेड के साथ वापस आए हैं और नवीन ये बात देखने लायक है कि अगर वो सावंत खत्री मौजूद है तो सावंत खत्री रेड के लिए नहीं आए हैं, सचिन मेनपाल महज आ रहे हैं। Yeah, because they want to inflect the do-or-die raid first, and that's why he's even taking some time. They need to understand that the do-or-die raid will also come into their kitty. The next one, the next raid will be a do-or-die raid for Hampi Heroes. Somewhere if they can go down on Vishal Chaudhary and probably tackle him, because we've seen so many super tackles in this winter edition. And once again, Vishal Chaudhary with the running hand touch gets his man. And Sachin Mainpal couldn't do anything about it. जी सचिन मेनपाल और विशाल चौधरी ने अच्छी वहां पर तारीफ भी करनी होगी कि अच्छा काम वहां पर किया क्योंकि वो सावन खत्री के पास नहीं गए। इस बार जानते थे कि सावन खत्री ज्यादा उन्हें अटैक करने नहीं आएंगे, सचिन मेनपाल की तरफ वहां पर गए और सचिन मेनपाल के एंकल्स कोशिश जरूर की थी कि विशाल के एंकल्स पर जाएं, बट आसानी के साथ टच कर पॉइंट निकल गया। और मैं नवीन सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सावन खत्री दूसरी रेड में क्या प्रयास कर सकते थे, पर इस बार टर्न किया है, टर्न बॉल किया है और अपनी टीम को पॉइंट दिलाया है। अनुज ने यहाँ पर एक बड़ी गलती की है, ऑल आउट से सेव हो रहा है अब हम्पी हीरोज। Very much, and look at that anti-block with all that, giving away the bonus and then the anti-dash, turns, keeps the hand on the defender, then uses him as a bouncing material and he turns away. That was very nice. Now Vishal Chaudhary does the same thing. Outward turn towards the lobby and then what was necessary for Savan Khatri to go for the block. और ये यहाँ पर सावन खत्री को करने की आवश्यकता नहीं थी, ये बिल्कुल भी सावन खत्री को करने की आवश्यकता नहीं थी। आपने पिछली रेड में अपनी टीम के लिए काम किया था, जरूर आपने गौरव को वहां पर बुला लिया है, गौरव भी अब एक रेडर हैं। गौरव प्रयास करना चाहेंगे इस बार, क्या लॉबी को टच किया था, क्या मिडलाइन को टच किया था, लॉबी में रहकर बोनस जरूर मिला है बट ऑल आउट हो जाएगी। अरावली एरोज पिछली रेड में नहीं तो इस रेड में जरूर यहाँ पर ऑल आउट कर देगा हम्पी हीरोज को और इस मुकाबले का पहला ऑल आउट अब हम्पी हीरोज के तौर पर आपको नजर आ जाएगा। Yeah, from that right cover came a very strong Nitin Kumar. He lifted the raider off the lobby and that's where the block was even more powerful. But again, where was the defender? Why were there two raiders in a super tackle situation for Hampi Heroes? Yeah. Why was I don't think so. Even on the substitutes, Ravi Khatri, yeah, maybe he could have been substituted in as a defender, and even Ankush Rathi. Ankush Rathi also is a defender. Nobody came on the mat, and that's why this all out. And see now, it's 6-2 12 for Aravalli Arrows. और राहुल राठी भी वहां पर डिफेंडर के कंटेंडर में थे, यानी कि वो राहुल राठी जो आशीष मलिक के बाद सबसे बेस्ट डिफेंडर है अपनी टीम के। जरूर योगेश दहिया को मौका मिला है। राहुल राठी पिछले 2 मैच से शायद थोड़ा सा इंजरी का भी कंसर्न था। बहुत अच्छा, जैसे ही देखा था कि थोड़ा सा रेडर का वहां पर इम्बैलेंस हुआ, लेग्स तुरंत वहां पर गए, ब्लॉक और डैश एक साथ करने का प्रयास है। देखिए यहाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस रेडर हुए, उसके बाद नवप्रीत ने इस मौके को बुनाया और अपनी टीम को एक और पॉइंट अर्जित कराया। Yeah, Vishnu Sharma, he's done well. He's really coordinated well with Vishal Chaudhary. Now does not get it. He's been dashed out of the lobby. Yogesh Daya, top third best defender of the monsoon edition, comes back and in style once again. और नवीन यही मेरा थोड़ा सा इशू रहता है विष्णु को लेकर, क्योंकि विष्णु अक्सर मैंने उनके लगातार मुकाबले जब देख रहा हूं तो वो कॉर्नर्स पर हमेशा राइट कॉर्नर पर शिकार बनते हैं, हमेशा बोनस का प्रयास करते हैं, वो वहीं से पॉइंट भी लाते हैं। पिछली बार जब वो 2 पॉइंट लेकर आए थे तो वहीं से वो पॉइंट लेकर आए थे। योगेश दहिया को उन्होंने शिकार बनाया था और राजेंद्र भाकर के विंटर एडिशन की शुरुआत ऐसे होगी। टैकल करने का प्रयास जरूर था इनकी तरफ से पहला, बट करमवीर ठाकुर ने अच्छा काम किया। जैसे ही देखा एंकल्स आ रहे हैं, बहुत सही टाइमिंग पर वो किक को इनिशिएट किया और टच कर वापस आ गए। No, he did not expect that. Rajendra Bakar did not expect the legs will go up so quickly. He was just thinking that he will come for the bonus, and he was just going in for a half kick.
Aravalli There, Rajendra Bhatta, first error from him. Once again, Vishal Chaudhary steals a bonus. So what that really helps the Aravalli Arrows is just pushing away the do-or-die raids. It's really important to keep up the count and the momentum of the do-or-die raid as Gaurav Kumar tries his best. Really well saved and retrieved back in time from Navpreet Singh. 1 point. Oh, we thought that he retrieved back, but no, there was a hand touch. Very faint one. The hand touch, not the kick maybe. The hand touch, yes. क्योंकि शायद वो किक पहले जब हैंड टच के बाद जब उन्होंने किक लगाई तो शायद वहां पर जो नी के नीचे वाला एरिया होता है वहां पर क्या किक लगा था, पर चले पॉइंट जरूर मिला है। अब विशाल चौधरी आशीष मलिक के नीचे से उन्होंने लगातार बोनस चुराए हैं और आशीष मलिक की देखिए नवीन एक अच्छी बात ये रहती है कि शुरुआती क्षणों में वो बहुत ज़्यादा टैकल्स का बहुत अतिरिक्त प्रयास नहीं करते हैं। जब तक उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत भी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर विशाल चौधरी को लगातार बोनस देना ये अरावली एरोज के लिए बेहतर है। Yeah, very much. Oh, he wanted to go for it. It's so close that time. Nitin Kumar playing in that right in position. Yes, he goes. I was just mentioning about that. No. Second line of defense. Once again, Nitin Kumar. I think it's been dashed out. 1 point. Yeah, he was dashed out outside the lobby. And that's what Rajkumar says. No. You've been coming from outside the lobby. That's the second time Nitin Kumar has done that. And then once again, he comes as the second line of defense himself, Nitin Kumar. That's real good game skills and game awareness. Because on that occasion, Rohit Yadav was there. Now Rohit Nandal gets his tackle point and Rohit Yadav has to go back. जी रोहित नंदल और सचिन मेनपाल की इस बार जोड़ी बहुत अच्छा काम किया। ये कॉम्बिनेटेड टैकल था और ये बेस्ट कवर अटैक आप देखते हैं कि जो लेफ्ट कवर होता है वो अगर वो अपर बॉडी पर जा रहा है तो जो साथी कवर का जो खिलाड़ी है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पर जा रहा है। इससे आप पूरी तरह से इंश्योर करते हैं कि रेडर के पास कोई भी मौका बने नहीं और अगर एक तरफ से छूट भी जाए तो दूसरे खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद रहे। बट अब सावन खत्री पिछला मैच इनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहा था और सावन खत्री नहीं ये खतरा बनते हैं अगेंस्ट टीम के लिए। 17 पॉइंट भी लेकर आए थे पिछले मैच में अब विशाल चौधरी। मुझे लगता है कि आशीष मलिक की तरफ से टैकल पॉइंट जल्दी आ सकता है नवीन। अब very much and there once again he just goes in towards that left corner and then Ashish Malik still does not want to go for it. Now Yogesh Daya puts in the double tie hold, comes in front of Vishal Chaudhary and pins him down so much closer to the midline. जी बहुत अच्छा डबल टाई होल्ड और रोहित नंदल का सही समय पर वहां पर साथ आया। रोहित नंदल का बहुत अच्छा वहां पर सही समय पर सपोर्ट आया और असिस्ट किया उस टैकल को। 11-16 का अब स्कोर है। अरावली एरोज ने एक बार जरूर हम्पी हीरोज को ऑल आउट किया है। गौरव कुमार सुपर टैकल का मौका है। विष्णु कुमार शर्मा वहां पर खेल रहे हैं और नंबर जर्सी ने क्या प्रयास किया था बट ये प्रयास सिर्फ नलीफाई कर दिया। अब अरावली एरोज ऑल आउट की तर्ज पर है। Anuj Saini, the captain, he was not going with the chain. He should have gone with the chain. He left the chain open and then wanted to hold him off the shoulders. The shoulder tackle also not a very successful weapon against the Rhinos. Charging towards the midline. Now the dash. Rohit Nandal and then the cover of Navpreet Singh. Right, coming in together on that occasion. There. Sachin Mainpal and Rohit Nandal. और नवीन इसी की बात कर रहे थे। नवीन हम इसी की बात कर रहे थे। विष्णु कुमार शर्मा और यहाँ पर जरूर शायद सरेंडर रेड वहां पर हो चुकी है और 3 पॉइंट वहां पर मिल चुके हैं। हम्पी हीरोज बहुत जल्दी वापसी की है हम्पी हीरोज ने और ये होती है एक टॉप क्वालिटी टीम की यहाँ पर प्रदर्शनी और बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और विष्णु कुमार शर्मा देखिए फिर से वहां पर राइट फ्लैंक के नीचे से जाकर उन्होंने बोनस का प्रयास किया। हर बार आप सिर्फ डिटरमाइन होकर अगर वहीं पर लगातार जाएंगे तो मुझे लगता है कि डिटरमाइन हो जाते हैं डिफेंडर्स की। विष्णु यहीं से आएंगे उन्हें यहीं से पकड़ा जा सकता है बट विशाल ने इस बार बिल्कुल नहीं किया। योगेश दहिया का एडवांस टैकल। Yeah, he did not have the angle. He just went with the momentum. He just went with the momentum. He did not want to do that. Just making sure the body took him towards the way that he wanted to go, but his mind did not go there. Rajendra Bakar says no, he's not got the bonus, but how many times we've seen Rajendra Bakar change course of the game in the second half. He's a second half player for me. Oh, jumps over the radar and he saves himself.
Hampi Heroes. That's a Jersey big number jump. 17 out. ओ बेहतरीन जंप वहां पर लगाई और देखिए जिस तरह से पहले यहां पर बचे और हाँ उन्होंने फिर से प्रयास किया था। ये अच्छी बात है कि रीडर की उन्होंने फिर से प्रयास किया कि जितने ज्यादा पॉइंट आप प्राप्त कर पाएं और देखिए देखते ही देखते स्कोर सिर्फ अब 1 पॉइंट की लीडर अरावली एरोज के पास रह गई है। बट नवीन एक और छोटा सा प्रश्न इस टॉपिक पर थोड़ी सी अगर हम बात करें, हिमांशु चौधरी जो इतना अच्छा काम यहाँ पर कर रहे थे, राइट कॉर्नर पर विशाल ने किक लगाने का प्रयास किया है, शायद रिव्यू के लिए भी जाएंगे। आशीष मलिक ने कहा है कि जी नहीं, कहीं भी कोई वो टो टच हुआ नहीं है। बट हिमांशु चौधरी जो कि प्रॉपर राइट कॉर्नर इतने मुकाबलों से आपके लिए खेल रहे हैं, पहले रिव्यू की बात करते हैं। अरावली एरोज रिव्यू चाहता है, विशाल चौधरी रिव्यू चाहते हैं कि टच पॉइंट मिला है। Aravalli Arrows challenges touch points. Our decision, no touch point. Please review. Yeah, it did not look like there was so much of a huge contact. Now, because of the sweeping toe touch, oh my God! It is the distance between Puducherry and Chennai. It is 80 kilometers away, the city, Chennai and Puducherry. That's what the distance is from Vishal Chaudhry's legs and Ashish Malik's legs. Review unsuccessful. No Oh my God, what was he trying to contest? Review is over. No more review. रिव्यू के लिए भी गए थे विशाल चौधरी, यानी कि उन्हें क्या पता कहाँ मैट का शायद एहसास हो गया कि कहीं उनके शूज पर जाकर टच हुआ, वरना बहुत ज्यादा डिस्टेंस वहां पर था। और क्या ये सिर्फ एक ही टो टच का अटेम्प्ट था, ये भी जरूर शायद वहां पर देखा गया होगा। बट अब यहाँ पर हम्पी हीरो से कुछ वार्तालाप करना चाह रहे हैं। भाई बोनस नहीं जानी चाहिए, हाथ गिरा का ठीक है, 4 बोनस दे रहे हो, 4 बोनस आएगा वो मारो ट्राई यार कि खाओ थोड़ी ना सामने। चलो शाबाश। Yeah, he very clearly said there's a lot of bonus that's been leaking. और ये तारीफ करनी होगी राजकुमार सर की, सपोर्ट पे जाओ। हमेशा अग्रेसिव रहते हैं। वहीं सूरज साहब भी यही कह रहे हैं कि आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। लेफ्ट कॉर्नर राजेंद्र भाकर को कहा गया कि सपोर्ट के साथ जाइए, टैकल के लिए जाइए, सपोर्ट दीजिए साथी खिलाड़ियों को। गौरव कुमार अब एक बार फिर से आपको राइट लगाते हुए दिखेंगे लेफ्ट कॉर्नर के राजेंद्र भाकर के लिए पहला पॉइंट आ सकता है। बट नवीन, वो जो हम बात कर रहे थे रिव्यू से पहले, उसकी तरफ वापस आते हैं। हिमांशु चौधरी जो बहुत अच्छी टैकल स्ट्राइक रेट के साथ और आपके मेन डिफेंडर थे, उन्हें आपने तुरंत वहां पर बाहर किया है। अनुज अंदर आए हैं, माने एक बड़े डिफेंडर हैं, बट उन्हें तुरंत बुला लिया है और उन्हें तुरंत कप्तानी भी दे दी गई है। तो नवीन, क्या प्लेयर के लिए थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद आप वहां पर बाहर भी बैठे हैं और कोई अगर नया खिलाड़ी आ जाता है, माना बहुत बेहतर खिलाड़ी है अनुज, बट आप किस तरह से देखते हैं इसे? See, again, as Vishal Chaudhary gets that point of the right cover, does not go back in time. Rohit Nandal does not even support. We've seen that so many times. Sachin Mainpal. Right, so speaking about Himanshu Chaudhary for the Aravalli Arrows, see, one thing you'll have to remember, it's not the name that will actually give in the sport. It's about the strategy. Say, if, for example, now Karambir Thakur comes in as a right raider, and you have Rajendra Bakar coming back, and Suraj Gujjar today has made the change of Anuj Saini. So you will have to just really go back and see which raiders you're actually targeting. As a defender, if Himanshu Chaudhary is done well, I will really ask what is the consistency rate. When and there is good chance that if there is the competition, that is good. You don't have to feel sad about it. You don't have to feel bad also about that. How much of consistent performance that you have been putting across is a big question. And when you're playing against a big team like Hampi Heroes, who have made a comeback after a very slow start. So it depends on which opposition you're playing also. So that also matters a lot. नवीन, आई थिंक कि अगर आप वहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लाएं। बिल्कुल आपने सही कहा कि रेडर्स के साथ हो सकता है कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि राजेंद्र और अनुज बहुत एक साथ वहाँ पर खेलते हैं, दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो रही है वो लगभग सक्सेस रेट जो उनकी रही है वो ओवर 50% है। और ओवर 50% जो आप एक अच्छी सक्सेस रेट टैकल में देखते हैं, क्योंकि 55-60 के बीच में अगर आपकी टैकल सक्सेस रेट है और आप लगातार प्ले टू वॉच आउट फॉर्म में नजर आ रहे थे जब आपकी टीम का मैच है, बट शायद हो सकता है कि अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जैसा अच्छा इस बार कॉम्बिनेशन नजर आया। योगेश दैया बता रहे हैं मॉनसून एडिशन जहां उन्होंने समाप्त किया था, बिल्कुल वैसा ही यहां पर विंटर एडिशन के लिए उनकी शुरुआत है। Yeah, again goes for the double ankle holds. He always does that. Double thigh holds, double ankle holds. That's a very good strategy against a raider who is very tall and runs
towards that right flank, towards his very, very speedy side. Yes, see, even if Himanshu Chaudhary is sitting outside on the bench and thinking, why was he not picked? Anuj Saini also knows as we come to the end of the first half. Yeah, it's a very, very Change the low court. scoring encounter as Hampi Heroes have come back somehow in this match into striking distance. So, Anuj Saini also knows that he does not perform. Himanshu Chaudhary will be immediately put in by Suraj Gurjar. So, that sort of a combination and competition is really good. See, because the tackle points are all equal. And where the Aravalli Arrows is leading is just with the grading points. Let's see if Hampi Heroes and Aravalli Arrows put up a even more better fight in the second half. We'll come back after a short little break. Welcome back, everybody. And the defensive point has actually not been working well. But Hampi Heroes have come back because of the strong covers of Rohit Nandal and also that right corner Yogesh Dhaya. So they will want to do that even more because of the left raider, right raider combination. And Vishal Chaudhary being a right raider goes, attacks the right flank instead of the left. And then also Vishnu Kumar being a left raider goes towards Yogesh Dhaya even more. So Rohit Nandal becomes even more effective as Kalidas gives the whistle to go ahead for the first raid of the second half. And it is going to be Savan Khatri. I am Navin Chaudhary. Alongside with me is Harshit. Harshit, yes, we were speaking about Himanshu Chaudhary. So he knows that in the back of the mind, if Anuj Saini does not perform well, he always has a chance to come into the team. I'll tell you something. See, the world will speak about everybody. The world will speak about, say, let me give an example, Sanju Samson. Okay? Now tell me something. How much of an innings, see, I have nothing against Sanju Samson. He's a very good wicket keeper. He's a very good batter. He's a good person to speak to. Very humble. I've spoken to him a lot, worked with him very closely. But tell me, how much of match-winning knocks has come from Sanju Samson in that finisher's role? Or how much of an impact that he's had with his bat when somewhere even if India is putting up that total batting first. So it depends on the impact of the match also. As a player, if you want to have your side and the players in the side, you want to know the impact, and that's the very, very impactful tackle as we speak about Anuj Saini. So tell me, if Himanshu Chaudhary could go attack the raider in that fashion, yeah, goes in, does not allow the raider to turn, and even after the turn, gets the raider not to escape through the lobby. So that is what you need to bring in. See, everybody are good. I'm not saying somebody is bad, somebody is not having the rights to be playing there or whatever. Everybody is good, but it's just that difference between a better and a best player. We don't want just good players. We want better players. We want best players, right? So that is the combination that they will go with. Yeah, and we can keep on discussing of how the world is coming to a very good support for Sanju Samson. Yeah, coaching during the raid for Rajkumar. चलिए ग्रीन कार्ड यहाँ पर दर्शाया गया है और पिछले से पिछले मैच में इन्हें येलो कार्ड भी दर्शाया गया था, अंतिम कुछ मिनट्स के लिए इन्हें बाहर भेजा गया था और उसके बाद पिछले मैच में बतौर कोचिंग करते हुए दिखे नहीं थे। पर चलिए इस बार वापस आए और रौनक को पिछली बार मौका मिला था और अब यहाँ पर रोहित नंदल, देखिए हम्पी हीरोज जो कि आपको फर्स्ट हाफ के बाद नजर आया सेकंड हाफ की शुरुआत में कि डियो
और डीओ ने ही पॉइंट निकाले हैं हम्पी हीरोज के डिफेंस में। रोहित नंदल और योगेश दहिया इस बार रेड में पॉइंट लाना चाहते थे। योगेश, माफ कीजिएगा, रोहित नंदल बड़ा अच्छी तरह से काम किया यहाँ पर, डुबकी लगाना चाहते थे, कवर्स प्रॉपर। Anuj Saini, see, once again, he goes in and that back dupki, always we have seen Raiders just escaping with that back dupki or the reverse dupki. Now that time Anuj Saini did not allow the Raider to go back, and now Yogesh Daya allows Rohit Yadav to go for the kick. And Rohit Yadav, yes, he is very impressive. He's a very young Raider, very small at age. You can see that innocence in his face still. It's just that he's just come back after writing his 12th board examination. That's what he looks like. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने के बाद वो 12वीं के एग्जाम देंगे अपने, क्योंकि अभी वो एग्जाम सीजन आने वाला है और बिल्कुल फाइनल एग्जाम के बाद पता चलेगा। बट यहाँ एग्जाम अब गौरव कुमार की होगी, क्या सचिन मेनपाल की होगी, क्योंकि हम्पी हीरोज को क्या यहाँ से रिवाइवल मिल सकता है। जरूर डिफेंडर हैं, डिफेंस में जाकर अपनी कलाकृति को दर्शाना चाहेंगे, क्या बोनस मिला है जी नहीं। नंबर 10 जर्सी आशीष मलिक को आज बिल्कुल यहाँ पर एक भी पॉइंट लेने का नहीं दिया है अरावली एरोज की रेडर्स ने। इस बार देखिए सचिन तो स्वयं बाहर चले गए थे, उससे पहले क्या टच भी था। रोहित यादव इंप्रेसिव यूथ नजर आ रहे हैं और इसीलिए युवा कबड्डी सीरीज को कहा जाता है वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। Yeah, Rohit somewhere does not understand there. He could have gone in. Rohit Yadav should have gone towards the other defender also, because Sachin Mainpal was slipping and trying to get up from that midline. He should have just gone towards Ashish Malik and get his hands. बट क्या नवीन, think on उन्होंने those शायद occasions. वो रील देख ली थी वंजीनाथन वाली, वंजीनाथन के टैकल की शायद उन्होंने वो रील देख ली थी, जिसके बाद रोहित गए नहीं थे। बट अब यहाँ पर पूरी हम्पी हीरोज को जाना भी पड़ेगा और आना भी पड़ेगा, ऑल आउट कर देगा। वाइस वर्सा यहाँ पर चल रहा है। पहले अरावली एरोज ने हम्पी को ऑल आउट किया, उसके बाद हम्पी ने ऑल आउट किया और अब लीजिए अरावली एरोज। राजेंद्र भाकर यहाँ पर डाइव लगाया और शिकार बनाया। 28-19 फिर से लीड बहुत बढ़ गई है नवीन। Yeah, pocket dynamite actually fires for the first time in this match. As I told you, he is a second half player, and there once again Rohit Nandal says okay, that's enough, comes across and sends Rohit Yadav back on the bench. But yes, speak about Rajendra Bhakar. How many times we have seen him change the course of the match in the second half. That's what he is, and he's that little pocket dynamite which can blast any time. Just be careful now. Gaurav Kumar once again tries to go for that bonus. See, it's just match practice. There is no match practice, and that was a surprise attack that came in. He wants 2 points though now, Gaurav. 17 out. Oh, got a super rate. 2+ बोनस यानी कि सुपर रेट। सेकेंड हाफ की एक बड़ी सुपर रेट अब यहाँ पर आपको हम्पी हीरोज से नजर आएगी। और देखिए नवप्रीत, ऐसा लगा कि उनके मोमेंटम के चलते ही वो शायद उनका पैर अपने किसी पैर में फंस गया था, जिसके बाद नवप्रीत के मोमेंटम ने मदद की गौरव की मिडलाइन को शायद पार करते हुए, ऐसा ही नजर आया। और इस बार सुपर रेड के साथ फिर से हम्पी हीरोज ने वापसी की है। 4 का हाउस है अरावली एरोज के पास। नवीन, कहाँ लगा था वो नवप्रीत, शायद थोड़े से फंस गए थे, जिसके बाद जो रेडर को था उन्होंने शायद मिडलाइन की तरफ ही फेंकने का वहां पर प्रयास कर लिया। Yeah, Navpreet did not go. See, because of the angle. Navpreet being once again that sort of a left cover defender, and when the left cover goes into attack a right raider, you don't have the proper angle. If it comes off, yeah, it'll look nice. But if it does not, it'll look so awkward, like in the previous tackle that happened. Now Vishnu Sharma. And for me, Yogesh Daya, I think he's the tallest defender that I have seen him. Generally, defenders are not so tall. He's like a raider, actually, Yogesh Daya. And to go down so much onto the ankles of a raider, that needs a lot of body, to be twisted and tumbled. A lot of effort being put on your knees and body. Right now this is the time as Ashish actually on that left corner. Ashish Malik actually called Vishal Chaudhary, saying, come. This is your 2 or die raid. That's what it looks like. Dash does not come in time. He wants 2 points. Rohit Nandal does not go for the waste. Yeah, he's got 2 points also. जी, यहाँ से 2 पॉइंट उन्हें मिलते हुए दिखेंगे। विशाल चौधरी यहाँ सबसे पहले उन्होंने शायद सावन खत्री को टच किया
उसके बाद रोहित नंदन ने डैश करने की कोशिश की। ये डैश शायद थोड़ा सा कुछ क्षण पहले आना चाहिए था, ये प्रॉपर टाइम पर, क्योंकि विशाल चौधरी ऑलरेडी वहां पर मोमेंटम बना चुके थे। अब मोमेंटम क्या बना पाएंगे गौरव कुमार? इससे पहले एक सुपर रेड ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब अनुज सैनी एक बार फिर से वही शोल्डर टैकल के लिए गए और इम्पैक्टफुल टैकल यहां पर नजर आएगा। टैकल की तारीफ करनी होगी, एडवांस जरूर था बट अच्छा सपोर्ट भी आया और अनुज ने उसे अपने पक्ष में भी निकाला। This is the third time that he is doing this in the second half. Goes for the shoulders and then gets hold of the waist and then gets the support from Rajendra Bhakkar. So that is what you're speaking of, Anuj Saini. See, this is what I was telling you. What is the impact that you have brought in the match? Yes, I agree, Himanshu Chaudhary may be good. He may be really good in terms of the numbers and tackle strike rate and everything. As Sanju Samson, yes, he is very good. But how do you make your place very reasonable? By showing your impactness on the match. So that is what you will be judged upon. So that is what you always go back on to say. And see, I'll tell you something. On the back of the mind, very clearly, Rishabh Pant knows that yes, there is one Sanju Samson who will be knocking on the doors every single time. As a keeper, as a batter and everything. Anuj Saini now makes the error of not going for the attack. There, half-hearted attempt. Very, very half-hearted. Raider was करमवीर ठाकुर, आखिरकार करमवीर ठाकुर वहां पर आपको रेड को देखने में मिले और मैं बड़ा आश्चर्यजनक था वहां पर कि करमवीर आज ज्यादा रेड कर नहीं रहे हैं। क्या वो कोच के माइंड में है? क्योंकि कल करमवीर जिन्होंने अटैकिंग शुरुआत की थी अपनी टीम के लिए और पहली ही रेड से और पहले हाफ में बहुत सारी उन्होंने रेड्स लगाई, डिफेंस में भी कल नजर आए। आज आशीष और करमवीर दोनों ही यहाँ पर थोड़े से धीमे नजर आए हैं, थोड़े से शांत नजर आए हैं, बट अभी भी जो आने वाली 11.25 मिनट है उसमें क्या ये तूफान से पहले की शांति का अंदेशा था। आशीष मलिक बहुत तेजी के साथ गए हैं, बहुत तेजी के साथ आए हैं और शायद अब आमंत्रण दे रहे हैं रोहित यादव को कि आइए डू और डाई रेड लगाइए। See, that would have been a good strategy if you are leading, but when you are trailing behind by 7 points, and now the plan worked, and once again Yogesh Daya with the ankle hold, and I think Rohit Yadav is just fallen on the mat flat. There we go. He did not have a escape route that was being blocked. और योगेश भैया के आपने बिल्कुल सही कहा था नवीन, कि उनकी जो फिजिक है वो बिल्कुल इस प्रकार की है कि रेडर हैं बट उसके बावजूद इतने वो स्ट्रॉन्ग दिखते नहीं है, बट उनके एंकल होल्ड, डबल थाई होल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। इस बार राजेंद्र भाकर क्या उतने ही पावरफुल नजर आ पाएंगे? अच्छा सपोर्ट, विष्णु कुमार शर्मा ने एंकल्स को पकड़ा, नितिन कुमार ने यहाँ पर पूरी तरह से श्योर किया। ओ बहुत इंटरेस्टिंग रेड थी नवीन। Very much, and also Rajendra Bhakkar, the pocket dynamo that I keep speaking about, comes across and gets his man. Karambir Thakur, yes, he's got that issue of not firing when it is needed. So that's what I say, where Hampi Heroes are lacking a raider. I really want Ankit Rana to now come back on the mat. He's sitting there on the bench. If we can have the shots of the bench of Hampi Heroes, he is sitting right there. And if he can make a comeback, this lead can be reduced. There is still time for the Raiders to make an impact in this match for the Hampi Heroes. But if not, if you don't bring on Ankit Rana there, Rajkumar, the coach of Hampi Heroes, probably you will be staring at your first loss in the booster round. It is almost looking like the Aravalli Arrows' Raiders are taken away. And even in the first half, when we closed the first 20 minutes, Arshad, we saw Aravalli Arrows were away from the Hampi Heroes because of the raid points. The tackles were all the similar, 6 points each. But Aravalli Arrows were looking more ahead because of the raiders. And Hampi Heroes, as I say, is lacking at least one raider. जी बिल्कुल, हम्पी हीरोज के लिए बहुत ज्यादा अटैकिंग को रेडर्स आपको नजर आए नहीं है। जब अरावली एरोज की डिफेंस ने गलती की है तब वहां पर हम्पी हीरोज के रेडर्स को थोड़े ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। और गौरव कुमार एक लौते आज ऐसे रेडर यहाँ पर नजर आए जिन्होंने इंपैक्टफुल प्रदर्शन दर्शाया है। बट इस बार इंपैक्टफुल प्रदर्शन रोहित नंदन से। रोहित नंदन ने विष्णु कुमार शर्मा जो कि कॉर्नर्स का अक्षर शिकार बनते हैं, इस बार फिर से वहां पर शिकार बनेंगे और रोहित नंदन के लिए बड़ा टैकल पॉइंट। और यहां से शायद you had to make sure your escape route was correct. The escape route, he did not have that in his mind and just got stuck in that corner position.
Gaurav Kumar now a do-or-die raid. Hampi Heroes, very important raid for them in the context of the game. But Anuj Seni says, no way. Let me get my high five and I'll block you and push you across. और इससे पहले जब रोहित नंदल ने हाई फाइव बनाया उसके बाद यहाँ पर कप्तान ने इंपैक्टफुल प्रदर्शन बिल्कुल जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर दिखाते हुए अनुज और बड़ा टैकल पॉइंट 7 पॉइंट की लीड अरावली एरोज के पास है। ऐसे वो काम चल पाएगा नहीं हम्पी हीरोज का कि आप टैकल में जरूर पॉइंट्स ला रहे हैं, बट यहाँ पर तो टैकल में भी पॉइंट नहीं मिला है। योगेश दहिया थोड़ा सा जल्दी वहां पर एडवांस टैकल के लिए चले गए थे, बहुत अच्छा जंप लगाया अपने लेफ्ट हैंड साइड में विशाल ने और मिड लाइन को क्रॉस किया। Yeah, it's high time. It's really high time for Ankit Rana to step in because Hampi Heroes need raid points. And I do not understand why is Rajkumar so hesitant to put on Ankit Rana. You've brought in a big player from the Kaziranga Rhinos. He started well, he did well, and he is not struggling with the injury. See, I know even 70%, 80% fit Ankit Rana also is enough to make sure this lead has been wiped out. As we will have a strategic timeout, Kalidas sends back the raider. Now let's listen to Rajkumar. What has he got in the mind actually? Because they are trailing by exactly 6 points. Yeah, we've got this. I think we'll have to go to Rajkumar, the coach. रोहित नंदल का हाई फाइव दिख रहा है, बट वो कोच साहब क्या शायद वहां पर है नहीं मैट पर। क्या वो स्वयं सभी खिलाड़ी वार्तालाप कर रहे हैं? I should say that's not very interesting. That's strange. That's very strange. The coach does not come in with the strategic timeout, and he does not want to have Ankit Rana back on the mat from the bench. And Aravalli Arrows are running away with this, as Anuj Seni also, as we spoke about his high five, got it right. Right, very strange bit of a tactics by Rajkumar. और विष्णु कुमार शर्मा, और आज वहां पर हम्पी हीरोज के लिए रेडर्स के साथ साथ डिफेंडर्स में भी सिर्फ 2 ही डिफेंडर ने पॉइंट निकाले हैं नवीन। एक वो रोहित नंदल है और दूसरे वो योगेश दहिया हैं। रोहित नंदल अभी भी वहां पर मौजूद है, 5 टैकल पॉइंट वो ले चुके हैं, 4 योगेश दहिया के पास हैं, सिर्फ 9 ही टैकल पॉइंट हम्पी हीरोज के पास हैं। इन दोनों ने ही मिलाकर वो सारे टैकल पॉइंट लिए हैं। आशीष मलिक का आज थोड़ा सा शांत रहना ये भी इस लीड के लिए वहां पर मजबूरी बना देता है हम्पी हीरोज के लिए। 8 पॉइंट की जो लीड है अरावली एरोज के पास, अब रेडर उसे चाहेंगे बोनस टच पॉइंट के साथ धीरे धीरे एक पॉइंट के साथ कम किया जाए। Yeah, because Hampi Heroes have not understood this match inside out. Because you have Rajendra Bakar and Anuj Seni, and Ankit Rana generally is a left raider. Jump was nice, but in the wrong direction for Savan Khatri. He jumped inside the lobby. जी बोनस जरूर चुराया था उससे पहले। ये देखिए जंप बहुत अच्छा था, बट उसके बाद अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए। वो अपने पैरों पर लैंड होना या फिर वो आपको क्रॉल कर कर तेजी के साथ जाना वो बहुत जरूरी होता है, और डायरेक्शन पूरी तरह से लॉबी की तरफ थी। वो मोमेंटम बिल्कुल भी मिड लाइन की तरफ नहीं था, बट अब क्या मोमेंटम बना पाएगी हम्पी हीरोज? क्या पहला टैकल पॉइंट आशीष को मिलेगा या फिर अभी भी वहां पर नहीं मिल पाएगा? 2 टैकल पॉइंट्स मिलते हैं सुपर टैकल के। मौका जरूर सुनहरा है हम्पी हीरोज, अन्यथा ऑल आउट के आप बड़े करीब जा सकते हैं। Again, just running in very quickly. Ashish Malik comes back, says, yes, this is your do-or-die raid in the super tackle. So there is opportunity, very much. Rohit Nandal, Ashish Malik, 2 strong defenders, and also Sachin Mainpal. All 3 defenders there. They should probably pin down Vishnu Kumar Sharma. I think the raider is out. Yeah, raider is out. It's a super tackle. And don't even bother rechecking that. जरूर अब हम्पी हीरोज को सुपर टैकल मिला है। एक और पॉइंट यहां पर अब आप जोड़ लेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहां डैश हुआ और लेग्स को बहुत सही समय पर सचिन मेनपाल ने वहां पर लेग्स को बहुत सही समय पर आउट ऑफ द लॉबी कर दिया। इससे क्या हुआ है, करमवीर ठाकुर आए हैं। अंकित राणा बिल्कुल भी शायद कोच नहीं देख रहे अंकित राणा की तरफ, या तो बिल्कुल कोच आ रहे हैं कि बिल्कुल अंकित राणा के विरुद्ध आप जीते, उनके बिना आप जीते, बट यहाँ सिर्फ क्या एक बोनस चुराया है, क्या आप धीरे धीरे लीड को कम कर रहे हैं। 35-30 का स्कोर है नवीन, 35-30। Yeah, see, most of
I'll tell you something. Why I love sports is because your corporate culture does not work on a field, or whether it's on the mat or on the field. Your corporate structure of saying, okay, this person doesn't perform, this person performs. You plot against the person. You backbite a person in the corporate setup, any corporate setup. Let me be very honest in that. There, Ankit Rana. So, the corporate setup does not work in sport. I'll tell you something. Everybody's performance is very, very clear on the court, on the mat, on the field. So, whatever you want to take it as, tennis, football, hockey, kabaddi, badminton, cricket, whatever, as they will go in for a review. And the reason why I say this is because it's not just with that one mail or backbiting your boss or talking to your manager, and then talking to and plotting against your colleague, not allowing him to go up the ladder. Yeah, that's why I love sports. You cannot mix corporate with sports. Hampi Heroes. I'll come back to that. Bonus plus 1 point. Our decision. Let us say 1 point. No bonus. Please review. Yeah, they just want a review. They just want the bonus. So let's see if he's got the bonus first. Very wrong way of taking a bonus. His trailing foot is landed and planted completely inside the walk line. Does not get it. Karambir Thakur goes off. See, this is what happens. If it is Ankit Rana, you don't even have to bother about the bonus points. He will get you bonus points. He will get you touch points. And when Ankit Rana is sitting so fresh and he is smiling, he's got no injury whatsoever. Look at this. This is Karambir Thakur. That is a live example of how corporatism does not work in any sport. And when you say, even if the coach is not favoring Ankit Rana, I'll tell you something. It is like you put him on the mat and the performance will speak. Whether you like, don't like, that is secondary. That should not come in. That is off the mat. That is in your hotel room. That is in your bus, wherever you are traveling. That is personal. For me, in sport, I will put my biggest enemy also. If he is in my team, I will put my biggest enemy also on the mat if he can make my team win. Now, that comes from a true sports person. Now, and I'll tell you something. I've been into a lot of sports setups. I've played for a lot of teams. Don't you think we will have that friction between players? Yes, we do. Don't you think everybody is friends in the team? No, they are not. But when it comes to team victory, all your personal agenda should be away. That's all I'll say. Exactly, very true, Naveen. पर अब यहाँ पर डू और डाई रेड है. अब यहाँ पर डू और डाई रेड है. 3 की लीड सिर्फ वहां पर थी. आशीष मलिक का आज ये पहला उनका टैकल अटेम्प्ट था. यहाँ पर उन्होंने रिवर्स एंकल होल्ड करने की कोशिश की और अब ये 3 पॉइंट की लीड 4 पॉइंट की लीड पहुंचेगी. अंकित राणा के बारे में इतनी देर से हम वार्तालाप वहां पर कर रहे थे, बट यहाँ पर विशाल चौधरी कह रहे हैं कि चलिए थोड़ा सा वो जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो शायद बदला जाएगा, क्योंकि क्या उन्होंने भी अपना यहाँ पर सुपर 10 पूरा किया है विशाल चौधरी. इससे पहले लगातार बेंच पर थे, कुछ मैचेस बेंच पर बैठे. ये होता है किसी बड़े खिलाड़ी के लिए बड़ी वापसी. सुपर 10 के साथ 4 पॉइंट की लीड अरावली एरोज के पास. बड़ा ये मुकाबला बन रहा है. हम्पी हीरोज धीरे धीरे प्रयास कर रहा है. क्या सोच विचार किया गया? बोनस प्लस 1 पॉइंट लीजिए. बोनस भी दिया गया है यहाँ पर विशाल चौधरी को. और रिव्यू हम्पी हीरोज गवा चुकी है करमवीर के थोड़ा सा गलत बोनस के चलते. देखिए अब पता चला है कि रिव्यू की कितनी महत्वता होती है. नवीन, Yeah, lucky bonus for Vishal Chaudhary. That was not a right way of doing it. He was landing both the feet at the same time. Now Gaurav Kumar with the error that's coming in. And that's what happens when you go for the advanced tackles. जी रोहित यादव को इसकी आवश्यकता थी नहीं. राइट इनकी पोजीशन में मौजूद थे और रोहित यादव उसके बाद अनुज की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि आप अक्सर किसी और की तरफ देखते हैं. बट अब आए राजकुमार. ठीक है, मैच जीतना दो. ठीक है, कैच बनाओ, कोई दिक्कत को ना भाई. टूटिए ना भाई. देखिए गलती नहीं, गलती का मौका नहीं है. जब एक भी गलती होगी तो मैच गया. Yes, I agree what he says. He says raider ही लाना पड़ेगा. I know, yes. But even if Ankit Rana is carrying an injury, I'll tell you something, Harshit. Don't you think even a 60% fit Ankit Rana for a couple of raids, why not take a chance? Isn't it? Second time over. जी बिल्कुल, वो हो सकता था अंकित राणा की तरफ जाए अगर उतना वो शायद
इंपॉर्टेंट मैच होता या फिर क्योंकि शायद 3 में से जो 3 जीत है बूस्टर राउंड में और टॉप ऑफ द टेबल Yeah, अगर maybe. आप कंफर्टेबली बैठे हैं, पर शायद हो सकता है कि ये No, चोटिल no, नहीं no. करना Yeah, चाहते correct. क्योंकि आने वाले जो No, राउंड है I चैलेंजर agree और with समिट your राउंड जो point. है नवीन No, I agree with your point. I agree with your point, but I'll tell you something. We are carrying forward points. You cannot be sitting pretty on top and say that, okay, this match it does not bother me. That doesn't happen. That doesn't happen in Yuva Kabaddi series. Maybe in any other professional league, but in Yuva Kabaddi series that never happens because every point, every match is important because the points are carried forward. And today, Amit Seni is made sure that he is the most important right corner defender as a captain. जी इस बार फिर से पहले डुबकी लगा दी थी, पहले वहां पर गौरव ने दिखा दिया था कि वो इस स्किल के साथ जाना चाहते हैं, वो अपनी आर्ट दर्शाना चाहते हैं, बट उसे नलीफाई किया। 5 पॉइंट की लीड अभी भी है, 1.25 मिनट का समय शेष और बिल्कुल नवीन आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अंकित राणा वहां पर क्या 3-4 रेड लगाने आ सकते थे जब वहां पर 6-5 मिनट के आसपास का समय शेष था और वहां पर लगानी भी चाहिए थी क्योंकि अभी सावन खत्री आपके लिए मौजूद है। क्या सावन अगली रेड लगाएंगे? बट सावन और करमवीर वैसा वो इंपैक्टफुल रेड लगाना और मल्टीपल रेड पॉइंट्स लाने की आवश्यकता होगी। 5 पॉइंट की लीड, 1.5 मिनट का समय, करमवीर ठाकुर रेड पर, लेफ्ट कॉर्नर पर राजेंद्र, राइट कॉर्नर पर अनुज। 2 पॉइंट है शायद यहाँ पर, क्या 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट? Yeah, 2 points, 2 points. 17 and 8 out. Anuj Seni and Navpreet Singh, both of them. Now let's see what happened there. Anuj Seni goes, Navpreet, no, can they go for that? Can they go for the review? Aravalli Arrows have won. Yes, they are going. Yes, they are going in for the review. Yeah, very rightly because Navpreet was nowhere near Savan Khatri. Rajendra Basa, is it? No, Vishnu says only 1 point. Aravalli Arrows challenges only 1 touch point. Our decision, that is said, 2 points. Please review. Let us see what just happened. Anuj Seni went in for the double thigh hold. Jump was very nice by Savan. There, no, Karambir Thakur. And then, is that the connection? Is that the toes of Navpreet? Doesn't look like. This is a better angle with the zoomer in. He's jumping. He's actually jumping there. He's actually jumping, and in that motion, very tough to actually have a connection. But this raid will decide the course of the match as well. Because if it's 2 points, they will come down to a 4-point lead. That's all, the Aravalli Arrows. So somewhere, Karambir Thakur has put the raid of the match for me. ये 2 पॉइंटर अगर रेड होती है तो सिर्फ 3 पॉइंट की लीड अरावली एरोज के पास क्या रह जाएगी या फिर 4 पॉइंट की, ये जरूर हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। बट ये देखिए सभी के चेहरों पर इस निर्णय का यहाँ पर तंज बना हुआ है और देखिए शायद वहाँ पर प्रेयर्स चल रही है क्योंकि अरावली एरोज 50% मुकाबले जीती है। पर ये देखिए इससे पता चलता है कि कबड्डी क्या चीज है सभी के लिए, चाहे आप कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में हो या फिर ना हो, कबड्डी का खेल हर एक मैच में नया खेल बनाया करता है। और मैं तो हर एक मैच नहीं, रिव्यू सक्सेसफुल, बहुत अच्छा रिव्यू, सही समय पर तारीफ करनी होगी। और करमवीर भी शायद उतने अच्छे कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। सूरज गुजर साहब खुश हैं बट अनुज को जाना पड़ेगा बाहर। थोड़ा सा यहाँ पर एरर किया था अनुज ने, इसकी इतने एडवांस जाने की शायद आवश्यकता थी नहीं इस समय पर। Yeah, actually, and also the prayer working out. Suraj Gurjar, we saw him. His lips were actually praying and his eyes were looking on top. So somewhere prayers working. Now, can that same prayer work for Vishnu Sharma? He has to go in for a do-or-die raid. Very importantly, attack covers. Yes, Rohit Nandal. He's just standing too high line on that left cover. He will attack him. Yes, he's got that momentum going. 2 points. 2 points, both the corners. Right. Ashish Malik and Yogesh Daya, both of them being wiped out by Vishnu. Not a day for the number 10 jersey. आज बिल्कुल वैसा दिन वहां पर गया नहीं है आशीष मलिक के लिए। ये 2 रेड पॉइंट्स पूरी तरह से शायद इस मुकाबले के निर्णय दे गई। ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल इस मुकाबला का यहाँ पर आपको निर्णय दे गया है। अब करमवीर ठाकुर आप थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, पर अरावली एरोज जानती है कि सिर्फ आपको डिफेंस में एक ही पॉइंट देगा, सिर्फ एक ही खिलाड़ी जाएगा, प्रयास करेगा और करमवीर को 1 पॉइंट ही मिलेगा। Yeah, that's okay. See, only one defender went for it as Nitin Kumar from right cover, so that's okay. They will actually go in. Substitution change.
और नवीन जो हमने कहा Suraj Gurjar wants everybody to have a feel of the match. 7 in. फाइनली हिमांशु चौधरी also came. Yeah, everybody. Bhagat Singh, Deepesh Kumar, Gopal Singh, and apart from Tosif Ahmed, everybody is in. And even Himanshu Chaudhary, come on. Right. 14 out. I think 15 everybody is in, and very good work by our graphics team. Yeah, there we go. Gopal Singh in place of Rajendra Bakar, and Vishnu Sharma also goes out, and Deepesh Kumar comes in, and probably they might not even get a chance for the defense. They can just come on the mat and show it to the lights and cameras saying, yes, we played this game. But imagine if Vishal Chaudhary runs the clock down, उसके बाद even शायद though क्या मौका they'll मिलेगा. have, I think, 2 seconds. Even though they'll have 2 seconds maybe. बट अगर हम्पी हीरोज चाहे तो शायद मौका ना मिले अगर वो अपने 2 सेकंड वही निकाल दे. बट विशाल चौधरी जरूर यही इंश्योर करेंगे कि वो पूरे 30 सेकंड ले रहे हैं. अब जरूर चलिए एक बार मौका मिलेगा. कौन वो डिफेंडर होंगे जो थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं. भगत वहां पर देखिए लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रहे हैं जहां पर अक्सर दीपेश खेलते हैं. भगत कह रहे हैं कि चलिए मैं एक बार फिर से जैसा नाम है वैसा ही काम करना चाहूंगा. गरम खोलता हुआ Himanshu, खून. I expected it. हिमांशु. Harshit, Happy heroes. I Jersey number expected Himanshu out. Chaudhary to go for it because he's feeling that the place is not being given to him. Anuj Seni has taken the place. I expected Himanshu Chaudhary to go for the tackle. He went. Yeah, that's okay. He's done well. Aravalli Arrows give the first taste of defeat to Hampi Naveen, Heroes, and Hampi Heroes are going down just because there were no proper raiders for them. शुरुआत में कहा गया था कि शायद आज हम्पी के लिए यहाँ पर पहली हार का सामना हो सकता है और बिल्कुल यहाँ पर वो पहली हार आपको बूस्टर राउंड में नजर आएगी हम्पी हीरोज के लिए. बट चलिए वो ज्यादा चिंताजनक है नहीं क्योंकि सिर्फ 4 पॉइंट की लीड थी. अच्छी फाइटिंग स्पिरिट वहां पर दर्शाई थी. पर अरावली एरोज के लिए एक बड़ी जीत है. और कहाँ हम्पी हीरोज के लिए आज चिंता रही है वो रही है डिफेंस में. सिर्फ 2 ही डिफेंडर्स को पॉइंट मिले हैं. रेडर्स में देखिए 11 पॉइंट गौरव कुमार को मिले, 5 सावन खत्री को मिले, 6 करमवीर ठाकुर को भी मिले. बट वैसा इम्पैक्टफुल प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जो आपको शायद अंतिम कुछ मिनट में चाहिए था, जो आप अंकित राणा जैसे खिलाड़ी से देख सकते हैं. बट अनुज आज पूरी तरह से नवीन उन्होंने अपने मार्क को दर्शाया और 7 टैकल पॉइंट्स के साथ इस मुकाबले को जीवित रखा हमेशा अरावली के लिए. Absolutely. And that is the place where you really want to have that impact and momentum going towards your side. Anuj Seni, fabulous bit of a defending from that right corner position. And Himanshu Chaudhary, I feel for the poor lad. He had just one opportunity and he wanted to show the coach that yes, I will go and take the place back. But yes, I think he will have to wait for a long time as Anuj Seni will not let that go. And with this performance, probably the coach also will feel that Anuj Seni will have more impact. But not to worry, we know what Himanshu Chaudhary also can do, so no problems. And also, talking about impact and speed, we also will have to speak something about our graphics operator as well, Mr. Neeraj. He made sure whoever's drawn out in whosoever plays, he put up the graphics in the right time. Good work there, Neeraj, as well as good work for the Aravalli Arrows as they're giving away that first taste of defeat to the Hampi Heroes. See, the raid points, that's okay, that's all there. But look at that. The war was lost in the tackle points, as only 11 tackle points came from the Hampi Heroes. And even those last few raid points, Savan Khatri and Karambir Thakur, it's just the defenders of Aravalli Arrows going in and giving away one single point each. That's why the defense, or rather the raid points are just up there. But Harshit, yes, I will let you go for the post-match presentation preparation as well. But we will have that top raider, Vishal Chaudhary. What an impact that he's been bringing in. Phenomenal and also very spectacular to watch. Match and match again. And I'm really shocked why is he still not on that top 3 raiders list. And the reason for that, yeah, we will get to know soon as the team progresses into the other rounds as well. 11 raid points today, a Super 10. Number of raids that he puts in is a long number, 25 raids. And the conversion sometimes becomes an issue. That's why probably he's not there in that top 3 raiders list. But Rohit Mandal, he's got his high-fi as well today. Again, very, very effective from that cover position, from that left cover towards all the left raiders of Aravalli Arrows. So did well. Nice bit of match for the Aravalli Arrows. Hampi Heroes tasting the first defeat. Vijayanagara Veers will want to have their victory against Panchala Pride. Panchala Pride being very, very strong with Mandeep Khatkar's coaching. Let's see what's going to happen. That's going to come up at another
5 p.m. game. But we will skip into a short little break and come back for the Aravalli Arrows and Hampi Heroes post-match presentation. I'm Navin Chaudhary signing off. See you soon at 5 p.m. So Aravalli Arrows became the first team to defeat Hampi Heroes in the booster round. Welcome to the post-match presentation of match number 62. In the presentation today, we have Mr. Tamil Selvan, sir, technical official YKS. Now we would like to thank our partners Dream 11 broadcast partner, Fancode Physio partner UEM, associate partner Swaraj Tractors. तो चलिए आखिरकार यहाँ पर हम्पी हीरोज और अरावली एरोज के मुकाबले का निर्णय आया. अरावली एरोज बेहतरीन खेल दर्शाया, 40-36 इस मुकाबले को जीता और अवार्ड्स की अब बात करना चाहेंगे और अवार्ड्स की शुरुआत करेंगे विद बेस्ट रीडर. एक बार फिर से अपनी टीम के लिए जिस खिलाड़ी ने स्टेप अप किया है और आकर दर्शाया है कि वो हमेशा विशाल का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करेंगे, वो है विशाल चौधरी, स्कोरिंग 11 रेड पॉइंट्स. एंड लेट्स हैव अ लुक. ज्यादा पॉइंट्स वहां पर डिफेंडर्स को मिले नहीं है जब आप डिफेंडर्स की बात करते हैं हम्पी हीरोज के लिए, बट उसके बावजूद इकलौते शानदार जो खिलाड़ी नजर आए हम्पी हीरोज के लिए डिफेंस में, वो थे रोहित नंदल. वही रहेंगे आज के बेस्ट डिफेंडर जिन्होंने स्कोर किए 7 टैकल पॉइंट्स. आइए देखते हैं उनके दमदार टैकल पॉइंट्स.
और एक बार अंतिम कुछ मिनटों में सिर्फ 4 पॉइंट की लीड वहां पर अरावली एरोज के पास रह गई थी और डू और डाई रेड अरावली एरोज की थी, पर उसे आप डू और डाई रेड नहीं गेम चेंजिंग रेड कहना चाहेंगे। जिस तरह से वहां पर 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए स्कोर किए, विष्णु कुमार शर्मा बने कबड्डी कमाल अवार्ड विनर। गेम चेंजिंग रेड आइए देखते हैं आप सभी के साथ। So it's a good game to start. Mighty Monday. Thank you so much for joining us. That's all from the post-match presentation of match number 62.